Namaskar viewers, hello and welcome to Sansad TV. I am Tina Jha. You're watching House Highlights, where we take you through the day's proceedings in both houses of Parliament. Let's begin with the headlines. Lok Sabha approves demands for grants for the Ministry of Railways. Railway Minister Ashwini Vaishnav says government has no plans to privatize Indian Railways. Rajya Sabha holds discussion on the working of Ministry of Tribal Affairs. Union Minister Arjun Munda asserts government committed to overall development of tribal society. The government will implement 7,500 crore rupees scheme to check road accidents, says Union Minister Nitin Gadkari. Asserts India will be global manufacturing hub for the EVs. And 60 crore people have benefited from One Nation, One Ration Card scheme, says Union Minister Piyush Goyal in Lok Sabha. So talking about proceedings in the lower house first, the Lok Sabha on Wednesday approved the demands for grants for the railways with a voice vote. Replying to a discussion on demands for grants for the Ministry of Railways for the year 2022-23 in Lok Sabha, Railway Minister Ashwini Vaishnav said the government has no plans to privatize the Indian Railways. The minister added capital investment, which was one of the main problems, increased over 95,000 crore rupees in 2019 from 45,980 crore rupees back in 2014. 2009 से 2014 में एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 45,980 करोड़ होता था रेलवे में। ये फैक्ट्स हैं, सभी के सामने कोई नए फैक्ट्स नहीं है। मोदी जी ने आते ही 14 से 19 के बीच में इसको डबल किया 99,511 करोड़ पर ईयर। ये फैक्ट्स हैं, ये रेलवे में इन्वेस्टमेंट डबल किया और उसका रिजल्ट आप सब देख ही रहे। और अध्यक्ष जी उस पे रुके नहीं, उस संख्या पे रुके नहीं। 19-20 में बढ़ाया, 20-21 में बढ़ाया, 22-23 में रिकॉर्ड कैपिटल एलोकेशन किया है 2,45,800 करोड़ का। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना, प्रधानमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया है उसको हम कितना तेज़ी से मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें। आप सबका सहयोग लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स का सहयोग लगेगा लैंड एक्विजिशन में, और किस तरह से जल्दी काम करें और ये 2,45,000 के नंबर को भी अगले आने वाले वर्षों में और बढ़ाएं। मेरा मानना है कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट साल में आए, तभी जाके हम देश के प्रति न्याय कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, नए ट्रैक यानी न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, मल्टी ट्रैकिंग 2009 से 14 में मात्र 1520 किलोमीटर पर ईयर होता था प्रति वर्ष। अध्यक्ष जी, इसको सीधा डबल किया 14 से 19 में, एग्जीक्यूशन भी, इन्वेस्टमेंट के कारण भी, दोनों के कारण 2,531 किलोमीटर पर ईयर रहा 14 से 19 में, और इस वर्ष हमने टारगेट लिया है 3,000 किलोमीटर का। और उसके लिए व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, किस तरह से फील्ड में काम करते हैं उसको बदल रहे हैं, किस तरह से एम्पावरमेंट फील्ड ऑफिसेस का कर रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा काम तेजी से हो। Ashwini Vaishnav also highlighted his ministry's various achievements, including those related to electrification of railways and freight corridor, presenting facts and figures in the House. अध्यक्ष जी, एश्योर्ड सेफ्टी रेलवे का संकल्प है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अध्यक्ष जी, सरकार ने 2018 में एक क्लियर डिसीजन लिया कि आईसीएफ के कोचेज़ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, सिर्फ एलएचबी के ही करेंगे। जो एग्जिस्टिंग है उनको तेज़ी से चेंज किया जा रहा है, तेज़ी से रिप्लेस किया जा रहा है। प्लस जो ट्रेन सेट्स आएगी उसकी सेफ्टी का लेवल ही अलग है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन होता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन किसी भी रेलवे सिस्टम के लिए सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी होती है। उसके लिए भारत में विकसित अपने ही इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप्ड कवच का एक बहुत शानदार सफल डेवलपमेंट हुआ। अध्यक्ष जी, बताने में बहुत खुशी होती है कि इसका जो सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट लेवल होता है SIL 4, SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। SIL 4 का मीनिंग होता है, अगर आम भाषा में बात करें, 11,600 वर्षों तक जो मशीन काम करे, सिर्फ एक बार फेल होगी।
Members cutting across party lines took part in the discussion as well. Listen in. Before the pandemic, Indian Railways used to provide concession to more than 50 categories of passengers. These include certain categories of Divyang passengers, senior citizens, freedom fighters, sports persons. Further, the Indian Railways also provides concession to railway employees by way of privilege passes, privilege ticket order, and complimentary passes. The concession vary from 10 to 100% of the fare, depending on the category of person. May I like to know whether the regime of concession has been restricted or it has been again restored in the pre-COVID situation? कि मुंबई में कई ऐसी ट्रेनें चालू हुई है लेकिन उनके फेयर इतने बड़ी है तो आम आदमी उसका फेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते। भविष्य में मुंबई सबअर्बन के प्रवासियों को एक ऐसी ट्रेन का प्रवास करने के लिए सहूलियती दरों से टिकट उपलब्ध करने की सरकार के माध्यम से कुछ नीति है क्या? 400 railway stations has already been taken for modernization and world-class stations. And first it was joint venture. Now the railway has taken a very wiseful decision that it will be done by the Railway Development Corporation. We would like to know specific answer from this also. These are the two issues which I would like to know. Moving on, the opposition in Lok Sabha pressed for increasing the budget for maintenance of roads and stringent laws to deal with overloading of vehicles and also reducing incidents of road accidents. Initiating a debate on demand for grants of the Ministry of Road Transport and Highways, Congress member A.R. Reddy said India has only 1% of the vehicles, while it accounts for 11% of road accidents globally. He also said the government should increase the budget for maintenance of roads to prevent such accidents. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जब अनाउंस किया था मार्च 23 तक ये लोग एक्सपेंडेड 25,000 किलोमीटर्स एक्सपेंशन करने में जाने वाले हैं, मगर वो हिसाब से अगर मार्च 23 तक अगर 25,000 किलोमीटर्स अगर नेशनल हाईवेज बनाना है तो हर दिन 68 किलोमीटर रोड बनाना है सर। आज के तारीख में जो डेवलपमेंट चल रहा है 37 किलोमीटर्स पर डे, मतलब ये तरीक़ा से अगर काम चलेगा तो और 7-8 साल लगेगा सर। 1,99,108 करोड़ जो इस साल का बजट एलोकेट किया है, मानवर हमारी जो पिछली साल का बजट था उस बजट की भी तुलना में हमने 52% इस मद में हमने वृद्धि की है, जो शायद आज तक के आज़ादी के बाद का ये पहला रिकॉर्ड है कि हमने अपने देश की रोड की कनेक्टिविटी में हमने किया। The finance minister made several announcements for the road sectors, including awarding 8,500 kilometers and constructing another 11,000 kilometers of NH corridors, but never mentioned how many has been completed till now. Most of the Indian roads are unsurfaced, that is 42.65%, and are not suitable for use of vehicular traffic. The poor maintenance of the roads aggravates the problem, especially in the rainy season. According to an estimate, there is about per year loss of rupees 200 crores on the wear and tear of the vehicles due to poor quality of roads. Speaking during Zero Hour in the Lok Sabha, Congress President Sonia Gandhi on Wednesday said global social media companies are being abused to hack India's democracy. She urged the government to put an end to their systematic influence and interference in electoral politics of the country. Listen in. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertisers
posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. The Centre on Wednesday ruled out special recruitment drives for filling vacancies of scheduled castes and scheduled tribes in the Indian Railways. Replying to supplementaries in the lower house, Railway Minister Ashwini Vaishnav said the Railways has been recruiting personnel at regular intervals and that there was no need to launch special drives. ओवर जो मूल प्रश्न है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे जो नौजवान हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्या उनको उनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव करने की ज़रूरत पड़े? अध्यक्ष जी, मैं इसका एक स्पष्ट उत्तर देना चाहूँगा। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है, तब से रेलवे में रिक्रूटमेंट एक रेगुलर तरीके से चल रहा है और जो नियम है, संविधान की जो व्यवस्था है, उस संविधान की व्यवस्था के हिसाब से जितना रिजर्वेशन होना चाहिए उतना रिजर्वेशन हो रहा है। एक पुराना समय ऐसा था जिसमें रिक्रूटमेंट ठीक टाइम पे होता नहीं था, तो वहाँ पे तब स्पेशल ड्राइव्स की ज़रूरत पड़ती थी। पिछली स्पेशल ड्राइव की ज़रूरत पड़ी 2008 में, अब कोई स्पेशल ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, अब एक रेगुलर तरीके से रिक्रूटमेंट चल रहा है। Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal lauded the government's One Nation, One Ration scheme in Lok Sabha. Listen in. In the last 2 or 3 months, we have found that after COVID, most of these workers have now gone back to their place of work in other states. But the One Nation, One Card facility has not been made available to them. You said 60 crore has been done. When do we expect all of India to be taken? What is the rough timeline, sir? 60 crore transactions have happened under portability. 77 crores out of 80 crores, and including now in the state of West Bengal. As you may be aware that West Bengal for a very long time resisted joining the One Nation, One Ration card scheme for a variety of reasons. But after the Supreme Court verdict came recently, I'm happy to share with you that West Bengal has also joined that scheme. They have also done the Aadhaar linkage of all the beneficiaries under the scheme. And there is no question, there's no power on earth which can stop the beneficiaries in your district from also getting the benefit of One Nation, One Ration card. Moving on, let's now take a look at what happened in the upper house of parliament on day 3 of the second part of the budget session. Well, Rajya Sabha held a discussion on the working of the Ministry of Tribal Affairs. Listen in. I would like to remind the Honorable Minister about 2 communities from the state of Tamil Nadu, in respect of which I had already requested for grant of scheduled tribe status and raised the matter in this August House. One of them, sir, is the Badaga community from Nilgiris district in the state of Tamil Nadu. The other community, sir, which I would urge the Honorable Minister to grant scheduled tribe status, is the Narikurava community. The allocation to the Ministry of Tribal Affairs has always increased over a period of time. However, the absorption capacity, that is the capacity to spend, has not matched up to the allocations made. The revised estimates has invariably been less than the budget estimates. So the biggest problem in the strategy for tribal development by the Tribal Affairs Ministry, I think traditionally has been on 3 counts. I call it as the CIA. It's not the American intelligence agency. C for convergence, lack of convergence. I, lack of institutional championship. And number 3, lack of awareness. पहले महीने पर में आप असम में जाइए, एक डिस्ट्रिक्ट में आज बंद कॉल है तो अगले दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, वो अपना डिमांड लेकर के फिर बंद कॉल करते हैं, क्यों सुनने वाला नहीं होते। भारत सरकार में कोई नहीं सुनते, राज्य सरकार नहीं सुनते, तो ऐसा करते करते पूरा नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा कितना अंडरग्राउंड एलिमेंट्स निकल गए थे, आज एक एक करके सरेंडर करके मुख्य धारा में आ रहा है। और अभी मणिपुर का चुनाव बिना किसी घटना के, छुटपुट घटनाएं जो चुनाव में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन बड़ा जो बंद कॉल होते हैं, बड़ा
जो बम ब्लास्ट होते हैं या गोली बारूद होते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ मणिपुर में। 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ और मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू होने के बाद पिछले 16-17 सालों में करीब 18 लाख व्यक्तिगत पट्टे दिए गए हैं। तो व्यक्तिगत पट्टे के नज़रिए से ये कानून बहुत सफल रहा है, बहुत प्रगतिशील कानून है। पहले यूपीए की सरकार में शुरुआत हुई, बाद में एनडीए की सरकार ने इसको आगे ले चला। पर जो सामुदायिक अधिकार है वो आज भी बहुत कम है, जितना होना चाहिए था। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, खास तौर से इन 3 राज्यों में सामुदायिक अधिकार देने में हम असफल रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कदम मंत्रालय की ओर से लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह ट्राइबल अफेयर्स को मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिससे कि यह पता चले कि किस विभाग के द्वारा किस तरीके से उस गांव को केंद्रित करते हुए कार्य हो रहा है, और यह सुनिश्चित करने का काम अब प्रारंभ हुआ है। हमने उन कमियों को दूर करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया और वो उसको गतिशील बनाने की कोशिश हुई। Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari on Wednesday informed the Rajya Sabha that the National Highway Authority of India is building over 1.47 lakh kilometers of roads in the country. Replying to supplementaries in the upper house, Gadkari said that the NHAI has taken several steps to rectify the black spots where the accidents occur. He assured the House that the government will implement a scheme worth 7,500 crore rupees to tackle road accidents in the country. ये जो ब्लैक स्पॉट है, इसके बारे में जो हमारे आरओ है, एनएचआई के जो रीजनल ऑफिसर हैं और मिनिस्ट्री जो एनएचआई का काम करती स्टेट में, उसका भी जो आरओ है, उनको हमने इस प्रकार का अधिकार दिया अभी कि इसके बाद अगर वहाँ 1 से 2-3 बार अगर एक्सीडेंट होते, 2 बार से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो ब्लैक स्पॉट करके वो वहाँ तुरंत कार्रवाई करें और उसको इम्प्रूव करें। और इसकी जिम्मेदारी उनको दी है और उनके अधिकार 50 करोड़ तक बढ़ाए गए हैं। और हमने एक 7,500 करोड़ की योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ली है और तमिलनाडु में विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उन्होंने कार्यक्रम जो इम्प्लीमेंट किया, उससे 50% एक्सीडेंट और डेथ में कमी आई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि यही कार्यक्रम हम पूरे देश में करेंगे और ये जो 7,000 करोड़ का अभी कार्यक्रम है, जो अभी जल्दी उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, तो हम एनएच के अलावा स्टेट को भी उनके यहाँ जो ब्लैक स्पॉट्स है, एक्सीडेंटल स्पॉट्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करेंगे। Nitin Gadkari exuded confidence that the cost of electric vehicles will soon come down to a level that will be at par with their petrol variants. In fact, he also asserted that India is set to be a global manufacturing hub for these electric vehicles. That up to the end of this year, the cost of petroleum two-wheeler, petroleum car and petroleum bus, even I'm not sure about the bus only, but about the car, three-wheeler and two-wheeler, the cost will be same. Because already we have a lot of problem regarding the import of crude oil. And this is the time for the country that we need to accept the policy that is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Sir, it's really a success story of Indian automobile industry. Presently we have turnover of 7.50 lakh crore. The all prestigious brand in the world now present in India. And sir, I am confident within 5 years, we will make it up to 15 lakh crore. And actually, we will be the highest in the world and we will be the manufacturing hub, #1 hub in the world. And during 0 hour in the upper house, members raised issues of urgent public importance. NCP member Vandana Chavan expressed concern over instances of misinformation during health crisis situations. She asked the government to develop a credible platform that provides fast, accurate and authentic information. In another 0 hour mention, Ashok Bajpai of the BJP demanded that vehicles that are in good condition should not be scrapped even after 10 years. Jose K. Mani of KCM expressed concern over unregulated rise in fares of air tickets, especially to Gulf countries, which is affecting millions of Indians who are working there.
Also speaking during the zero hour, BJP's Mahesh Poddar demanded that cancer warnings should be made mandatory on packets of processed meat in line with tobacco products. COVID pandemic, on the one side, we witnessed a spate of rumors, fake news, misinformation that spread amongst people through various social media platforms. So the WHO also has recognized this and called this the infodemic. I urge the government through you, sir, to find ways and means to mandate social media platforms to combat the infodemics comprising of rumors, fake news and misinformation. And secondly, like many other countries have done, through you, sir, I urge the government to develop a credible platform that provides fast, accurate, authentic information that is easily understandable and in the language of the people. यद्यपि इन गाड़ियों में न तो किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है और न किसी प्रकार से निष्प्रयोग किए जाने योग्य होती हैं। इन गाड़ियों में से किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं रहती, परंतु 10 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें दिल्ली जैसे महानगर में चलाना अपराध बन जाता है और इस तरह से बड़े पैमाने पर इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया जाता है। इससे व्यक्तिगत क्षति तो होती है, राष्ट्रीय क्षति भी होती है। इन गाड़ियों के संचालन के लिए पर्यावरण और प्रदूषण की समय समय पर जांच करा ली जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, मानक निर्धारित कर दिए जाएं और जो गाड़ियां ये मानक पूरे करती हैं उन गाड़ियों का पंजीकरण 10 साल से बढ़ाकर जब तक गाड़ियां चलने योग्य हैं उन्हें चलने की अनुमति प्रदान की जाए, उन्हें डिस्प्रयोजन घोषित किया जाए। The average price, the fare of normally for the air ticket from Cochin or Calicut to Dubai or even Sharjah or Abu Dhabi over 3 to 4 hours journeys from 15,000 to 20,000, maximum of 25,000 to and fro. But during the season, probably it's the vacation time, the festival time, the price is unregulated and high to 50,000, 60,000, 70,000, and they are not, these people cannot afford to come back home, sir. And moreover, there's a sign of cartelization is reflected as the price has been increased in the Indian Airlines as well as the international airlines, sir. So my request to the government of India, especially the aviation ministry, to intervene, have a maximum ceiling. भारत के भीतर भी कई फास्ट फूड चेन रेफ्रिजरेटेड मांस के विचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो चिंता का विषय है और समग्र आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस संबंध में मैं सरकार से इस पर कार्रवाई करने के लिए और ऐसे संशोधित प्रोसेस मीट पर कैंसर की चेतावनी अनिवार्य करने का आग्रह करता हूं और तंबाकू और सिगरेट उत्पादों के मामले में जिस तरह से होता है वैसे ही प्रोसेस्ड मीट के मामले में चेतावनी देने का आग्रह करता हूं। Minister of State for Parliamentary Affairs V. Muralidharan apprised the members of the upper house about the bills that the government wants to bring to the house next week. While some are pending bills, the minister mentioned that the House will take up Constitution SC/ST Order Amendment Bill next week. Listen in. Government business for the week commencing Monday, the 21st of March 2022 will consist of 1. Consideration of any items of government business carried over from today's order paper. Today's paper contains further discussion on the working of the Ministry of Tribal Affairs, discussion on the working of the Ministry of Railways, and consideration passing of the constitutional orders, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill 2022. Discussion on the working of the Ministry of Labour and Employment. 3. Consideration return of the appropriation bills relating to following demands as passed by Lok Sabha. 1. Supplementary demands for grants for 2021-22 and excess demands for grants 2018-19. 4. General discussion on the budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2022-23. 5. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands as passed by Lok Sabha. 1. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2021-22 and demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2022-23. 6. Consideration and passing of the Constitutional Order Scheduled Tribes Amendment Bill 2022 after it's passed by Lok Sabha. So that's it from us in this bulletin. Thank you for your time.